have Engineer Abdullah Aftab and Engineer Asjad Ali with us. They are well trained at grid system and connections and trained as electrical engineers at National Transmission and Dispatch Company Limited. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Just a little housekeeping before we proceed. It will be a 40 to 45-minute session, and the last 20 minutes are reserved for your queries. You can ask them directly, and we will unmute your mics, and you can also type them in the chat box. With that, I once again welcome you all. And now I would like to hand over the screen and the mic to our worthy guest speaker. Over to you, sir. Assalamu alaikum, this is Abdullah Aftab. First of all, for the confirmation, I'm audible to you. Yes, Yes, sir. sir, you are audible. Okay, so today we are going to just deliver a webinar on operation and maintenance of the wind turbines. So I'm Abdullah Aftab and I am doing maintenance and operation at the Metro Wind Turbines plant at Jampir, Sindh, which is located in Sindh, Thatta. So I will be accompanied by my fellow Asjad Ali. He's also operation and maintenance engineer at Siemens Gamesa, and he will just give you an introduction about wind turbines. I would like to invite Mr. Asjad Ali. Please go ahead and introduce about Assalamu wind alaikum. turbines. Am I audible to you? Yes, you are audible. Okay. My name is Asjad Ali, and I have completed my electrical engineering from UET Texla. So first of all, I would welcome all of you in the webinar, and I will give you a little bit of introduction about wind turbines and why wind energy is important for all of us. Okay. Now, as we know that there are different sources of wind generating electricity, and in Pakistan, talking about Pakistan, the major sources are coal and oil. But if we talk about the renewable energy sources, there are many sources like hydropower plant, wind energy, and solar. And wind is the second highest energy source, clean energy source for the Pakistan. Why wind energy is important to all of us, for all the humanity? We can say that because we want to reduce more and more carbon emission in our environment, and perhaps it is the biggest challenge for engineers right now, for especially electrical engineers, to reduce carbon emission through these sources. So first of all, I would give you about how wind turbine works, and then Mr. Abdullah will explain you about the operation system of wind turbines and maintenance of wind turbines. So Abdullah, kindly move the slides ahead. Um, as we know that sun is the major source of energy all over the world, and wind flows from high pressure to low pressure. So we actually harness the energy from that wind, and we utilize it using wind turbines. So there is a simple phenomena that is involved, how winds are created. Wind flows from high pressure to low pressure. The sun heats up the surface, and at that point, the density of wind is lower compared to the point where the temperature is lesser. So the wind flows from hot surface to the cold surface, and we harness those winds to obtain our energy, and we use that wind to produce electricity. So the basic phenomena is a simple formula that you all are aware of. It's the kinetic energy, which is half mv square. We harness the motion of wind and produce power from it. And the formula for the power is in the next slide, which is this half rho av cube. You all know this mathematics. These are very simple concepts that you must have studied in your power generation course, and you all are aware. You can have these slides and you can go through these. Now this is the major
portion that I would be explaining here is why area is important for this formula. Actually, our wind turbine consists of major parts which include tower, blades, hub, and nacelle. So the greater the blade would be, the more it would produce the energy. So you can see here from the figure that as the wind flows, the greater would be the blade, its overall circumference would be greater. So if the blades are big, they would harness more and more energy, which are clear from the figure. But there is a constraint. We cannot harness 100% of the wind energy because of the recent wind designs. Only 59.59 to 60% of the total energy is being harnessed. Because of the blade areas, there is a 120-degree difference between two blades, and the air would flow between the empty surfaces of the two blades, and only the area which is directly inclined toward the wind, that wind would be used to move the blades, and we will harness energy from only that portion of wind. So how now, in this slide you can see that how wind energy conversation happens. uh, Approximately you can say that out of total energy, a little bit of energy is wasted in the mechanical portion, and very less is wasted in the electrical portion, because the electrical systems are more efficient compared to the mechanical. So approximately 45 to 50% of energy is harnessed in the mechanical system, and out of that 45 to 50%, 90 to 95% is harnessed by our electrical system. Our wind turbine consists of three major portions: mechanical portion, electrical portion, and meteorological portion. The mechanical portion of our wind turbine involves the generator gearbox, blades, and the electrical portion involves the generator, the converter box, the transformer, and above the nacelle, there are few meteorological instruments that would be visible in few next slides. Move ahead, Abdullah. Now we would talk about how many types of wind turbine are there. There are horizontal and vertical axis wind turbines, and mostly the wind turbines which are being installed all over the world are horizontal axis wind turbines. All the wind turbines available in Pakistan are all horizontal axis wind turbines, and they are being mostly utilized. Now, this is the mechanical electrical single diagram that would, I think, clear all of your concepts. Uh, First of all, you can see that there is a rotor. The wind will come and hit our blades, and those blades would move a rotor. You know what happens in turbines actually? The blades move very slowly, they do not move fast. But we need to move our generator at higher speeds to make our field more and more stronger and generate more and more energy from that. So we use a gearbox system over there. They are called planetary gear systems. So the turbines on which we are working, the ratio of the gears is 1 to 120. That means if one blade of turbine completes its entire 360-degree rotation, the rotor of the generator would move 128 times. That happens in the planetary gearbox. And then from the generator, the power is generated, and approximately 690 volts are generated from the stator side of our generator. And then they are transferred to the 11 kV, and overall three phases that makes 33 kV. So we transfer 33 kV AC power at 50 hertz to our grid, and that grid further steps up that voltages to 132 kV, and then they are um, distributed to NTDC, and they do so whatever they want to do with that. So now I would like to invite Mr. Abdullah, and he will explain you
the further slides that are remaining. So over to you, Abdullah. Thanks, Mr. Asad Ali. So I'm just going deeply into the wind turbines components. So as I just explained that our blades are connected to the hub, and the hub is connected to the main shaft through the bearing. As you can see, it is visible in the picture. And when the air hits the blades move in clockwise or anti-clockwise direction, and then they are attached to the planetary gearbox. So the planetary gearbox plays a very important role in wind turbines. So the main purpose is to convert low speed into high speed, and then it is attached with the generator through the coupler. You can see it is a coupling, it is attached, and when we need to stop the production of electricity, we apply brakes through uh, this brake. And after that, the generator is connected to the transformer, which steps up the voltage and transmit it to the grid, nearby grid. As you can see in the picture, this is a hub which is comprised of three blades which are separated 120 degree from each other. This is called the hub, which contain all the blades. So our blade is about 57 meter high. So it is a very challenging condition to install a wind turbine also, because they are huge and enormous in size. You can see in this picture that the blade is at 87 degrees Celsius. It's a real-time blade picture of the Siemens 2 megawatt wind turbine. So as we know that the wind is not a constant, so there is up and down due to by the nature. We cannot control the wind, so we have to control the production of the electricity. So we use two methods. First method is the stall control, and the second, which is a modern method, which is a pitch control. In stall control, there is a fixed blade which is a specific pitch angle, and when there is a high wind, the blades automatically stops, and so we have no protection at high wind speed. And the mechanism we are using in Siemens Gamesa is pitch control. This pitch control, we just rotate the blade at its own axis and through the hydraulic actuator which is present in the nacelle. So we can vary the speed of the blades, and we can vary the production also. So we will discuss about the materials. What are the materials? Uh, the materials is titanium, steel, fiber, imposed composite materials, and you can see on different types we can make plate. So this is the inner hub. So there are both tightened here, and the pitching is carried by this cylinder, this cylindrical rod that moves the blade to certain degree that we want. So the drivetrain consists of main shaft, coupling, gearbox, brake, and the generator. So the shaft you can see in the picture is a cylindrical element designed to rotate and transmit the torque, and it's very huge. So there, I will explain it to you the different components in the wind turbines. In the wind turbines, the slow-moving shaft is placed inside this structure, and then this is the gearbox, which converts the low speed into high speed, and the hydraulic unit is placed here, which is used to put
a force or pressure for the movement of the blades. This is the coupling through which the generator is coupled with the gearbox, planetary gearbox. So now I will just tell you about the induction, double fed induction generator that has been used in the wind turbines, Siemens Gamesa wind turbines. So the stator, we just fed it with two sources. First, at the stator produces steady frequency electricity and transmit it to the grid. And the at the rotor side, we have the power electronics. It's a converter which converts the frequency at different levels so that the excitation takes place at different volts, and we will get a steady state frequency uh, at the output. So what are the advantages and disadvantages of the doubly fed induction generator? So the main advantage is it's a reduced capacity converter, it's a cost efficient, and because we can control the 30% of power through this converter. It's a smooth grid connection, and this disadvantage of the double fed induction generator is the regular maintenance of the slip rings and gearbox. Because we have too much friction at the slip rings, so we have to replace the carbon brush when there is a need. You can see in the picture that these are the carbon brushes placed over the slip rings, and the slip rings the carbon brush is attached, and it will just attach to the grid station. So I would like to call the Mr. Asjad Ali. He will just tell you about the control and protection system of the wind turbines. Am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, you're audible. ओके जी सर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कंट्रोल और प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए उसका प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंड टरबाइन इंस्टॉल तो हो जाती है, लेकिन बाद में उसको ऑपरेट करवाना और उसके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम और उसकी प्रोटेक्शन स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विंड टरबाइन एक कॉन्स्टेंटली मूविंग मशीन है। जब तक विंड रहेगी ये मूव करती रहेगी, तो इस पे बहुत से फॉल्ट्स आते हैं, बहुत से अलार्म्स आते हैं जो कि प्री डिज़ाइन होते हैं किसी भी विंड टरबाइन के लिए। क्योंकि विंड टरबाइन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, तो इस पे दोनों टाइप के अलार्म्स आते हैं, मैकेनिकल अलार्म्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल अलार्म्स आते हैं। तो सबसे पहले ये तो इस स्लाइड में थोड़े से अलार्म्स एडेड हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम और स्पेस नहीं था कि ऐड कर सके बहुत सी चीज़ें। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जनरेटर के अलार्म आते हैं। अब होता विंड टरबाइन पे यूं है कि विंड टरबाइन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं, तो इसमें अगर इवन कोई बोल्ट हल्का सा भी ढीला रह जाता है या वो प्रॉपर टाइट नहीं होता, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा हुआ है कुछ टरबाइन, एक दफ़ा एक टरबाइन को आग लग गई थी, क्योंकि उन लोगों ने उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की थी। वो लोग उन्होंने बोल्ट कुछ छोड़ दिए थे टीम ने, जिसकी वजह से उसके जनरेटर वाले पोर्शन को आग लगी थी और पूरी की पूरी विंड टरबाइन पाकिस्तान में सफायर पावर प्लांट पे जल गई थी। तो हमें कंट्रोल और प्रोटेक्शन बहुत ध्यान से करनी होती है विंड टरबाइन की। तो आगे इसके जो कंट्रोल सिस्टम में मोस्टली चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो इसका पिच सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है, सर्वेलेंस है। तो पिचिंग में तो सिंपली ये होता है कि आपका ब्लेड जो होता है वो 0 से 87 डिग्री के बीच में मूव करता है। जब हमें विंड टरबाइन रोकनी होती है तो हम उसको ऑटोमेटिकली 87 डिग्री पे लेकर चले जाते हैं। तो 87 डिग्री पर विंड जो यहाँ तो फ्री व्हीलिंग में चली जाती है, आप बिना ब्लेड बस घूमते रहेंगे, ऐसे कोई एनर्जी प्रोड्यूस
नहीं करेंगे वो, या हम उसको इमरजेंसी पे लगा के टरबाइन के ब्लेड्स को रोक देते हैं जब हमने अंदर जाकर क्यू जब हमने अंदर जाकर उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, स्पेसिफिकली टेंशनिंग करनी होती है। अब्दुल्ला स्लाइड आगे मूव करें प्लीज। तो पिचिंग में आपका ब्लेड जो होता है वो 0 से 87 डिग्री के अंदर मूव करता है, और यही आपकी पिच कंट्रोल होता है, जो कि अब्दुल्ला ने आपको आगे बताया भी था। अब हमें कंट्रोल की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमने मेंटेनेंस करनी है, तब भी हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, या फिर ऑटोमेटिकली जब खुद ब खुद टरबाइन रुकती है किसी अलार्म की वजह से, तब भी हमें कंट्रोल की ज़रूरत होती है, उसको रोकने के लिए भी और दोबारा उसको चलाने के लिए भी। आगे अब्दुल्ला आगे स्लाइड मूव करें, मैं बताता हूँ। तो जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वो मोस्टली उसमें इन्वॉल्व होती है आपकी पावर स्पीड कंट्रोल होता है, केबल ट्विस्ट होती है, टेम्परेचर कंट्रोल है, ये डिफरेंट टाइप के कंट्रोल है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल केबल ट्विस्ट लिमिट्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास विंड टरबाइन इन्वॉल्व हैं। इसमें जैसे जैसे टरबाइन घूमती है, असल में टरबाइन की नेसल होती है टॉप पे, तकरीबन ये 300 फीट के ऊपर है। तो जो वोल्टेज आ रही हैं वो ऊपर से नीचे वायर्स आ रही हैं केबल्स टावर के मुख्तलिफ पोर्शन से होते हुए। तो जैसे जैसे वो ऊपर से उसके ब्लेड्स घूमते हैं तो जो हाई वोल्टेज की केबल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं। तो फिर उनको अनट्विस्ट करने के लिए टरबाइन ऑटोमेटिकली एक अलार्म होता है 204, हम उसको बोलते हैं, कुछ इस तरह उसका नंबर होता है, अनवाइंडिंग ऑफ द केबल्स। तो टरबाइन ऑटोमेटिकली खुद रुकती है, रुक के दोबारा उसकी केबल्स को अनवाइंड करती है और फिर ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाती है वापस। इसमें हमें खुद फिजिकली टरबाइन पे नहीं जाना पड़ता, ये उसका कंट्रोल सिस्टम उससे करवाता है। कभी कभी कुछ कैबिनेट्स का, कन्वर्टर कैबिनेट्स का टेम्परेचर हाई हो जाता है, कूलेंट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, तो फिर टरबाइन खुद ब खुद रुकती है, टेम्परेचर डाउन करती है, फिर दोबारा खुद 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 स्टार्ट कर लेती है। तो इस तरह उसका कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसमें, और इसलिए कंट्रोल सिस्टम इम्पोर्टेंट है किसी भी डिजास्टर से बचाने के लिए। आगे ये एक जनरल सीक्वेंस है कि किस तरह टरबाइन जनरली वर्क करती है। तो फॉर एग्जांपल एक टरबाइन रुकी हुई है, तो रुकने के बाद सबसे पहले वो अपनी रेडी स्टेट में जाती है। रेडी स्टेट के बाद हमने, चूंकि यहाँ पे जो जनरेटर यूज हो रहा है ना वो है DFIG, और ये इसके जो मैग्नेट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर नहीं है ये। तो हमें खुद से ग्रिड से इसको पावर सप्लाई करनी पड़ती है उसको एनर्जाइज करवाने के लिए। जब एक दफ़ा जनरेटर एनर्जाइज हो जाता है तो फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके बन जाते हैं, तो खुद ब खुद वो पावर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो हमें तकरीबन 17 से 20 अम्पेयर तक करंट इसको देना पड़ता है इंस्टेंटली चलाने के लिए, जब टरबाइन वापस ऑपरेट करवानी है। तो सबसे पहले टरबाइन अपने मुख्तलिफ स्टेजेस हैं टरबाइन की। सबसे पहले टरबाइन जाती है इमरजेंसी स्टेट में, इमरजेंसी के बाद वो जाती है आपकी पॉज में, पॉज के बाद वो आपकी जाती है रन स्टेट में, और बीच में एक स्टेट आती है स्टॉप स्टेट। उसको हम खुद ब खुद फिजिकली जाके टरबाइन को जब हमने रोकना होता है तो हम स्टॉप स्टेट तब इन्वॉल्व करवाते हैं। तो ये उसका एक जनरल सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है स्लाइड में कि सबसे पहले आपकी टरबाइन स्टार्ट होगी, स्टार्ट के बाद वो ग्रिड से कनेक्ट होगी, ग्रिड से कनेक्ट होने के बाद अगर टरबाइन में कोई फॉल्ट नहीं है तो टरबाइन पावर प्रोडक्शन शुरू करेगी और वो पावर आपकी ग्रिड को ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा, चूंकि ये पाथ है डबल, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ग्रिड से पावर सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये ग्रिड से पावर भी जा सकती है और यहाँ से हम इसको टरबाइन से तो वोल्टेजेस प्रोड्यूस करने के बाद 33 kV देते ही देते हैं। तो जैसे ये ग्रिड से डिस्कनेक्ट होगी तो ये इमरजेंसी स्टेट में जाएगी और इमरजेंसी स्टेट से दोबारा आपकी उस स्टार्ट स्टेट में दोबारा चली जाएगी। आगे इसके प्रोटेक्शन सिस्टम है, डिफरेंट पोर्शन की प्रोटेक्शन है। यहाँ पे जनरेटर ओवरलोड हो जाता है अक्सर हमारा, यहाँ पर अभी तक हमारे पास तो जनरेटर ओवरलोड नहीं हुआ इस पावर प्लांट पे, क्योंकि विंड स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तान में। मैक्सिमम विंड स्पीड जो हमने देखी है वो तकरीबन
15 मीटर पर सेकंड है। तो इतनी स्पीड पे जो टरबाइन है वो 2 मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तकरीबन 1 मेगावाट के राउंड अबाउट पावर प्रोड्यूस हो रही होती है आपकी एक टरबाइन से। तो जनरेटर ओवर स्पीड कभी नहीं हुआ। एक्सेसिव वाइब्रेशन भी तब होंगी टरबाइन पे जब आपकी विंड स्पीड बहुत हाई होती है। तो जब हम ऊपर अक्सर इवन टरबाइन रोक के भी काम कर रहे होते थे तो उसकी नैसल कांप रही होती थी, हिल रही होती थी, उसमें वाइब्रेशंस होती थी। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम भी तब आपका आएगा जब आपकी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो आपकी टरबाइन में वाइब्रेशंस होंगी जिसका इम्पैक्ट बोल्ट्स पे भी पड़ता है और उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर टरबाइन प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो तो टरबाइन पूरी की पूरी नीचे भी गिर जाती है। और ये भी एक टरबाइन पिछले साल शायद गिरी है एक, वो प्रॉपरली जो इरेक्शन की टीम थी उन्होंने इरेक्ट नहीं की थी तो वो नीचे गिर गई थी। अब टरबाइन के मुख्तलिफ पोर्शन है जो है नेसल, हब है और ब्लेड्स हैं। नेसल के अंदर आपका पूरा पोर्शन, ये आपके पास पिक्चर्स बड़ी क्लियर होगी जिसमें आपको एक रियल टाइम विंड टरबाइन का नेसल नजर आ रहा होगा। इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, इसमें आपका एक तो है जनरेटर गियर बॉक्स जो कि आपको प्रॉपर नजर आ रहा है। उसके बाद आगे आपका है कन्वर्टर कैबिनेट है। और कन्वर्टर कैबिनेट, बिलीव मी, इट्स द एपोटमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये कन्वर्टर कैबिनेट पहले एसी पावर लेता है आपके जनरेटर से, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे सेट करता है, फिर दोबारा उसको एसी में 690 पे कन्वर्ट करके आपके ट्रांसफार्मर को आगे फीड करता है। तो ये बहुत इंटरनली बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है इसका। अंदर से आप इसको खोल के देखे, इसी के अंदर हमारा मेन पावर ब्रेकर भी इंस्टॉल होता है जो कि मेन ब्रेकर होता है आपके पूरी की पूरी 2 मेगावाट या इससे भी बड़ी टरबाइन है तो उनके लिए बड़ा ब्रेकर होगा, काफी बहुत बड़ा एयर प्रेशराइज्ड ब्रेकर होता है वो इसमें यूज होता है और वो भी आपके इसी कैबिनेट के अंदर होता है। तो ये आपके नेसल के अंदर ये चीजें लगी हुई होती हैं। और आगे अब्दुल्ला मूव करें। नेसल के बाद ये आपका मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम के ऊपर फॉर एग्जांपल जो भी विंड टरबाइन पे काम करना है तो आपने चलना फिरना तो है, तो मेन फ्रेम में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक्सटेंडेड कंपोनेंट्स होते हैं। जनरेटर गियर बॉक्स के एक्सटेंडेड कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आपके बाकी मुख्तलिफ यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर लगा होता है। जब भी टरबाइन इमरजेंसी स्टेट में जाती है तो हम हाइड्रोलिक प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं। तकरीबन 2000 बार का प्रेशर होता है वो, जो उसके 2000 बार बहुत बड़ी अमाउंट है प्रेशर की अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें तो। वो अप्लाई करते हैं उसके ब्लेड्स को रोकने के लिए। तो वो आपकी मेन फ्रेम के बिल्कुल ऊपर थोड़ा साइड पे इंस्टॉल होता है, जो कि आगे वाली स्लाइड में शायद होगा भी किसी में। आगे करो अब्दुल्ला। ये आपकी आपको योर ड्राइव नजर आ रही होगी, यहाँ पर लगी होती है मोटर्स। आपने जब अपनी विंड टरबाइन को मूव करवाना होता है ना, फॉर एग्जांपल विंड की डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहती है, कभी विंड किसी डायरेक्शन में है तो कभी किसी डायरेक्शन में है। नेसल के टॉप पे एक चीज लगी होती है उसको हम बोलते हैं विंड वैन। वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, वो डिटरमिन करवाता है कि आपकी टरबाइन किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वो अपनी एयर को यूटिलाइज करके वहां से एक लो वोल्टेज तकरीबन 20 से 24 वोल्ट का एक सिग्नल जनरेट करवाता है जो नीचे कन्वर्टर में आके फीड होता है। वो डिटरमिन करवाता है कि आपकी विंड, आपकी जो टरबाइन है वो किस डायरेक्शन में यॉ करेगी। वो जो यॉ होती है वो आपकी यॉ ड्राइव करवाती है। उसके नीचे यहाँ पर 5 मोटर्स लगी हुई हैं। वो 5 मोटर्स चलती हैं तो उस विंड की डायरेक्शन में आपकी विंड टरबाइन पूरी की पूरी मूव कर जाती है। और जैसे ही अपने इस टरबाइन को रोकना होता है, ब्रेक्स लगवानी होती है, तो वो लगती हैं यॉक क्लैंप्स के थ्रू। ये यॉक ड्राइव आपको अभी नजर आ रही होगी, ये मोटर्स हैं और ये अगली स्लाइड पे आपके यॉक क्लैंप्स हैं। ये यॉक क्लैंप्स तकरीबन 2 से 3 होते हैं। ये आपके जो यॉ डेक होता है ना, टावर का पोर्शन, उसमें लगे होते हैं ये बिल्कुल नेसल के नीचे। तो ये उसको इंस्टेंटली एकदम से ब्रेक लगवाते हैं।
जिस डायरेक्शन में जब भी आपने इमरजेंसी के केस में विंड टरबाइन को रोकना हो, या फिर आपने खुद विंड ने खुद मूव करके आपकी विंड टरबाइन ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो ये कन्वर्टर कैबिनेट है। और ये कन्वर्टर कैबिनेट का इंटरनल पोर्शन है जो आपके एसी 690 वोल्ट एसी जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, उनको डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करके वापस उस डीसी को 690 पे दोबारा एसी में कन्वर्ट करता है 50 हर्ट्ज पे। पहले क्या होता था, जो पुरानी विंड टरबाइंस थी जो इनिशियली इंस्टॉल हुई थी, उनमें ये होता था कि उनमें जो ग्रिड था वहां पर जाके फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती थी, वहां पे फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता था 50 हर्ट्ज पे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई इस टेक्नोलॉजी में, तो इन्होंने एक तो डबली फेड इंडक्शन जनरेटर यूज किया। वो इसलिए यूज किया क्योंकि वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है, वो स्टेटर और रोटर दोनों तरफ से पावर फीड करता है। तो उसके स्टेटर वाले पोर्शन से 690 वोल्ट एसी आते हैं आपके इस पे कन्वर्टर कैबिनेट पे, और उनको डीसी में कन्वर्ट करके उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करके वापस एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ट्रांसफार्मर पे वो 33 केवी पे कन्वर्ट होते हैं, और वो 33 केवी आपकी आगे जाते हैं। आगे अब टावर जो है विंड टरबाइन का, इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। जो हमारे यहाँ पे 2 मेगावाट की विंड टरबाइन है, इसके तकरीबन 3 पोर्शन है, 3 हाइट्स पे हैं, 33 मीटर पे हैं, तकरीबन 33 मीटर पे आपका एक टावर खत्म होता है। तो ये एक रियल टाइम पिक्चर है जिसपे ये हमें पहला प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, और इससे लिफ्ट भी ऊपर जा रही है। तो टरबाइंस के अंदर लिफ्ट्स भी इंस्टॉल होती हैं, या आपको मैनुअली क्लाइंब करना पड़ता है, या फिर आप अगर लिफ्ट इंस्टॉल है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना 300 फीट ऊपर चढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ये टावर जो होते हैं, ये फिर इन पे बोल्ट्स लगे होते हैं मुख्तलिफ साइजेस के, 30 M36 होते हैं, और इन्हीं की टेंशनिंग और टॉर्किंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक पूरे का पूरा वो टावर का एक पोर्शन इंस्टॉल हो रहा है जिसको क्रेन ने उठाया हुआ है, और फिर ये इरेक्शन की टीम इंस्टॉल करवाती है इनको। अब आगे इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस है विंड टरबाइन की, और इसमें जो आपकी मेंटेनेंस होती है वो इन्वॉल्व होती है, टेंशनिंग ऑफ ब्लेड्स होती है, टॉर्किंग ऑफ टावर बोल्ट्स होती है, मेन फ्रेम होती है, मेन शाफ्ट होती है, जनरेटर की टॉर्किंग होती है, उसके बाद ग्रीसिंग होती है जनरेटर की, यॉ टीथ्स की, और जो आपके फाइबर होते हैं ब्लेड्स के या इंटरनल हब के, उनकी क्लीनिंग भी होती है, और उसके प्लेटफॉर्म्स की क्लीनिंग भी होती है, ताकि कोई जंग या इस तरह का काम ना हो। तो बाकी पोर्शन जो आपको मेंटेनेंस और ऑपरेशन क्या वो एक्सप्लेन करेंगे अब्दुल्ला। अब तो अब्दुल्ला, ओवर टू यू नाउ। जी, हमारा जो मेन टॉपिक है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टरबाइन। हम जो मेंटेनेंस टरबाइंस की करते हैं वो साल में तकरीबन 3 दफ़ा करते हैं। एक हम 3 मंथ्स के बाद करते हैं, एक 6 मंथ्स के बाद करते हैं, और एक एनुअली करते हैं। क्योंकि टरबाइंस जो है डिफरेंट टावर्स का, जिस तरह असद ने बताया कि 3 टावर्स आपस में अटैच होते हैं बोल्ट्स के जरिए। तो क्योंकि ये एक टरबाइन जो है एक मूव करती है विंड की वजह से विंड को, तो इसके जो बोल्ट्स हैं वो अक्सर लूज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि हम इसकी टॉर्किंग और टेंशनिंग प्रॉपर टाइम से करें। तो हमारे पास बोल्ट को टाइट करने के 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट सर, ये तरीका आपकी हमारा आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। हेलो, जी सर। ऑडिबल? I was talking about the tensioning and the torquing. So tensioning में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं
और स्टड को हम पुल करते हैं। हम जिस तरह हब में इन बोर्ड्स लगे हुए हैं टरबाइन में, हम उस पर तकरीबन 1000 बार का प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो प्रेशर हम जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बोल्ट्स को खींचते हैं अपनी तरफ, और हम इजीली स्ट्रेचर से इसको हम टाइट कर देते हैं। सो ये एक इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और जो है ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट डू टेंशनिंग एज वेल। टॉर्किंग में हमारे पास यहाँ 3 टावर्स हैं, टावर 1, टावर 2 एंड टावर 3, और इस पे डिफरेंट बोल्ट्स लगे होते हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस तरह टावर 1 पर हम 625 बार का देते हैं, टावर 2 पे हम 400 देते हैं, एंड जो हम जॉ पे है हम 374 बार का प्रेशर अप्लाई करते हैं और हम टॉर्किंग करते हैं। ये 2 होजेस हैं जिनसे ऑयल इन होता है और एक से आउट होता है, और इससे एक रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होती है जिससे हम बोल्ट को टाइट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये एक मूविंग डिवाइस है, तो जो हमारा हब होता है, जो नेसल होता है, वो यहाँ पर रोटेट कर रही होती है, तो लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम 3M एंड 6M में ये यार्ड टीथ ये होती हैं, हम इसकी इंक्रीजिंग करते हैं प्रॉपरली फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए। ऑपरेशन ऑफ विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस की ऑपरेशन में हमारे पास डिफरेंट अलार्म्स आ जाते हैं अक्सर, जो ऑपरेटर्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्काडा सिस्टम से। सो कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारी टीम पहुंचती है उधर, और टर्बाइन का जो है वो फॉल्ट रिमूव करने की जल्द से जल्द कोशिश करती है। So there we have a SCADA system. You can see that we can observe the real-time data, instantaneous data from the remote side, and we can see that how much energy is produced of each wind turbine. सो जो हमारे पास टोटल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जिस एरिया में, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1856 मेगावाट पाकिस्तान से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि NREL की सर्वे के मुताबिक हम 132 मेगावाट की कैपेसिटी रखते हैं विंड टर्बाइंस के इंस्टॉलेशन की। चूँकि विंड टर्बाइंस जो है एक ट्रेंडिंग में है, एक रीन्यूएबल सोर्स है, हमारे पास ये एक फ्री सोर्स है, wind is free, and we don't have to spend money in order to get electricity, but we do have a maintenance and operation cost as well. So this is the wind map of Pakistan. You can just see that in Sindh there is a very good flow of wind at Jambir Gharu area, and in Balochistan we have also different sports, and in future different plants will be installed at this area. So this is our presentation. If anybody have any question, then you can ask from us, and we are here. Thanks for your time. Thank you so much, sir, for such an informative session. Now it's time for your queries. If you guys have any query, you can ask. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप क्या कहते हैं कि विंड टर्बाइंस जो हैं ये डोमेस्टिक यूज़ इनका हो सकता है? इस तरह सोलर पैनल्स हैं वो हर कोई यूज़ कर सकता है, तो इनका डोमेस्टिक यूज़ पॉसिबल है? जी इनका डोमेस्टिक यूज़ पॉसिबल है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम जहाँ विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं हम चाहते हैं कि विंड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ये ना हो कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, और बिल्डिंग्स के ऊपर हम इंस्टॉल नहीं करते विंड टर्बाइन को, स्ट्रक्चर्स को। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा एरिया है जहाँ कांस्टेंट विंड टर्बाइन की है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं छोटी विंड टर्बाइन, और अपनी जो डोमेस्टिक लोड है तो चला सकते हैं। सेकेंडली यार, जो विंड टर्बाइन का एक इशू होता है ना, वो ये है कि ये इनका नॉइज बहुत होता है। जब विंड स्पीड ज्यादा होती है ना, तो विंड टर्बाइन जब घूम रही होती है हाई स्पीड पे, तो बहुत ज्यादा नॉइज होता है। आप उसके नजदीक, चलती विंड टर्बाइन के नजदीक तो आप खड़े ही नहीं हो सकते।
आप बेहोश हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, इतना शोर होता है उसका। तो डोमेस्टिक यूज में एक ये भी थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम होगा कि आपने उसकी नॉइज को सप्रेस करना थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होती। और ये मूविंग पार्ट है इसकी, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो ये गिर सकता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काफी। और एक और जो इसमें कंस्ट्रेंट है वो ये है कि आपने अगर ज्यादा पावर प्रोड्यूस करनी है तो आपको बड़ी विंड टरबाइन लगानी पड़ेगी। तो डोमेस्टिकली आप इतनी बड़ी विंड टरबाइन तो इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, और छोटी टरबाइन इंस्टॉल करेंगे तो वो इतनी पावर नहीं प्रोड्यूस करवा सकेगी। सो इसलिए ये जो है ना डोमेस्टिक कंपेयर टू सोलर, ये इतना अच्छा डोमेस्टिकली इंस्टॉल नहीं हो सकती। ऑल राइट सर, थैंक यू। Anyone else want to ask something? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। Yes, you can ask. सर ये जो समुंदर के अंदर या पानी के अंदर टर्बाइन्स वगैरह लगाई जाती हैं बाहर के कंट्रीज में ज़्यादातर, तो सर ये मतलब पॉसिबल है हमारे जो अरेबियन सी इसके एरिया में? जी जी पॉसिबल है, और प्रोबेबली ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होंगे भी अगले कुछ सालों में। इनको ऑफ शोर बोलते हैं। ये जो हमारे पास विंड टरबाइन अभी तक जितनी लगी हैं ये ऑन शोर हैं। तो ये जो ऑफ शोर टेक्नोलॉजी है ये बाहर तो एक्सटेंसिवली यूज हो रही है, लेकिन जो मेजर रीजन है ना, लग जाएंगी टरबाइंस और यहाँ पे इतना पोटेंशियल भी है। मेजर रीजन है इकोनॉमी, कि आपके पास इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि वहां पे आप ये अफोर्ड कर सको, क्योंकि वो टरबाइंस कंपैरेटिवली बहुत इंट्रिकेट है और दे आर मच मच एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू दीज टरबाइंस। सो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे प्रोजेक्ट लगेंगे भी। अगर हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती है तो प्रोजेक्ट हैं आगे पाइपलाइन में जो कि इंस्टॉल होंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट सर। सर वैसे एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो इनकी इक्वल है ऑफशोर ऑन शोर की? आई थिंक सो नहीं, क्योंकि जो ऑफशोर है ना वहां पे आपकी विंड आपको अवेलेबल होगी। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहां पे परफेक्टली अप्लाई होगा। समंदर की तरफ से भी हवाएं आएंगी और जमीन से समंदर की तरफ भी जाएंगी, तो वो मच मोर एफिशिएंट होगी कंपेयर टू ऑफशोर। और वहां पे विंड स्पीड्स भी हाई होंगी। ऑल जी, राइट सर, ऑफशोर में थैंक यू। बेसिकली हमारे नाइट को भी जो है विंड चलती रहती है, तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो उसकी ज़्यादा है ऑफशोर की एज कम्पेयर टू ऑनशोर टर्बाइंस। ऑल राइट सर। सर वैसे ये भी तो हो सकता है कि मतलब पानी के साथ भी कोई टरबाइन लगा दी जाए जो पानी के फ्लो से ही मूव करे और विंड से अलग। यस, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वेव्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इस पे भी मूव कर रहे हैं, मगर अभी ये इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। हम विंड से भी कर रहे हैं और वेव से भी हम कर रहे हैं, मगर अभी प्रैक्टिकल नहीं है अभी। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह दिस वुड बी अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट विल बी अप्लाइड। यार सेकेंडली ये है कि सस्टेनेबिलिटी हमें अचीव करनी होती है इवेंचुअली। यहाँ पर भी जो विंड टरबाइन है हमने सस्टेनेबल पावर प्रोड्यूस करवानी है कि टरबाइन मूव करती रहे, हमने उसको चला के रखना है। तो वो जो सिस्टम है ना वो इतने सस्टेनेबल नहीं है अभी। बिल्कुल हम कर सकते हैं और ये हो भी रहा है, लेकिन अभी उनकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है कि उन सिस्टम्स को इतना सस्टेनेबल बनाया जाए कि हम वाटर के थ्रू भी उसकी विंड टरबाइन के साथ आपकी जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। उस पे काम हो रहा है और लैब्स पे डिजाइन न्यू न्यू आ रहे हैं, विंड टरबाइंस की भी न्यू डिजाइन आ रहे हैं, बड़े डिजाइन आ रहे हैं। तो उन चीजों पे काम हो रहा है। तो जैसे जैसे वो सिस्टम सस्टेनेबल होंगे तो वो फिर प्रैक्टिकल भी उतने ही होते जाएंगे और वो इन हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में भी।
All right, sir. Thank you. So, now, as we are done with the queries, it's time to wrap up this amazing webinar. Thank you so much, both of you, sir, for honoring us with your presence. I would also like to thank our attendees for becoming the part of this amazing session. Hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. Guys, kindly left the meeting. Okay, thanks for your presence.